नमस्ते, वेलकम टू मूड्स ऑफ भारत का नया पॉडकास्ट। आज जो हमारी गेस्ट है, शी इज अ ब्यूटी क्वीन। शी वाज मिस इंडिया 1979. She's been an actor. She's married to one of the greatest actors of Bharat, Sri Paresh Rawal ji. But there's a lot about her that you and I don't know. इस पॉडकास्ट में हमें ये जानने को मिलेगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एग्जैक्टली क्या है, उसमें क्या हो रहा है, किस तरह से नए करिकुलम्स डेवलप किए जा रहे हैं और भारत अब फिर से कैसे सोने की चिड़िया बनने के मार्ग पर चल पड़ा है। सो वॉच दिस पॉडकास्ट, लर्न अ लॉट, डू शेयर कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। लेट्स गेट इनटू अ कॉन्वर्सेशन विद स्वरूप जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। इट इज सच अ डिलाइट टू हैव यू ऑन द सेट। मतलब आज ऐसा लग रहा है हमारे सेट की एनर्जी एकदम से बहुत हाई चली गई है। And such a beautiful lady who was a Miss India and is also a great talented actor and married to somebody जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है in acting. So it is really an honor and proud for us that you are here. My pleasure. मैम, ये सब हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं आपके बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं। And you know, that is something which we really want to know. So much you are doing. Like अभी जब शूट से पहले हम बात कर रहे थे, you told me there's so much that you've done from so many years. So let's get on to that. Sure. What all you have been doing. जब माननीय प्रधानमंत्री जी, he was the CM of Gujarat, तब उन्होंने आपको बुलाया था for a program for on education for the rural areas. वो क्या था and how that entire thing started? Actually, you can say कि उन्होंने मुझे बुलाया नहीं था in that way. Okay, तो इसकी बहुत interesting story है। जी। 2005, 2006 मैंने PhD complete करके डॉक्टरल डिग्री लेके मैं इंडिया आई। और मैं sometimes मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी नादान थी। I mean, like, I was not a little kid. I was nearly 42, 43 at that time. But मैं कितनी simple थी और मैंने क्या किया पता है? मैंने सबको emails लिखे। जैसे the Minister of Education, NCRT, Chairperson, MHRD में लिखा। I wrote to, Education Secretaries. A lot in Maharashtra, in Gujarat, national level पे सबको। कुछ states जो मुझे मिल गए नाम तो मैंने लिखा। You know something? किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया। मैंने लिखा कि I've got this beautiful way of teaching और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। Means I'm not asking for an employment. I would like to help. तो मुझे याद है कि मैंने गुजरात के सीएम को थर्सडे लिखा था, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था एक छोटा सा इतना like 1 column by 1 inch का इंफॉर्मेशन था on 6th-7th page that the Gujarat CM is going to start a Bal University, a children's university. तो now that was like a concrete thing. तो मैंने सोचा कि मैं इनको लिखूँ कि I want to do something. तो थर्सडे को मैंने उनको लेटर लिखा। On Friday, I got a call from his office. And the person said that, we are from the CMO, and the CMO Gujarat will see you next Wednesday at Gandhinagar at this time. And I'm like, wow. So I went to Gujarat. Achha, he was so particular, like he means business and he wants things done. He had called both his education secretaries there to meet me. I met Anita Karwal ji there, which she was just the one before. She was the education secretary at the national level. Okay. So she was there, and there was another one called Jayanti Ravi ji. So I met them, and then I met him. And there's the talk afterwards that he thought that I would come, a girl from Mumbai, a star. She would ask for land to make a school. And he says, क्यों ये लोग इतने schools खोलना चाहते हैं? And he was so surprised because I said, I want to train the rural teachers. Wow, okay. And he says, okay. And there were 2-3 things which I'll take aside, but I want to tell you. Yes, please. It is very interesting. I learned 2-3 very interesting things that day.
one thing he said, okay, how many will you teach? So I said, 40, sir. So he says, 40? So I said, sir, this is experiential learning. And he said, bus 40? So I said, no, sir, then, we'll do the cascade method of 100 and 300 in the next years. He says, okay, start. And I kept wondering, why is he saying this? What is he saying? And his first speech for India, when he became the PM, he talked that we need speed, scale, and skill. And that's what he was talking to me then. Right. But I want to say that I'm really proud about it, is that in Gujarat, in 2015, I did a training of 2.5 lakh teachers simultaneously. Wow. Means एक साथ में 2.5 lakh teachers को मैंने सिखाया, rural teachers को. Awesome. So that is what he was talking about, speed, scale and skill. So that was one thing I learned, that अगर इंडिया में कुछ करना है तो we have to do speed, scale and skill. Otherwise we never reach anywhere. Correct. And आप देखेंगे, take it away from education a bit, the Narendra Modi ji जो कुछ भी करते हैं, it's all about speed, scale and skill. Absolutely. That was beautiful. Another thing he taught me that day is when I was saying, मैं बोल रही थी कि WHO ये कह रहा है, WHO World Health Organization ये कह रहा है, तो उन्होंने कहा WHO को मत कोट करो, कोई इंडियन कोट दो. तो I said, इंडियन में ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है. तो he said, नहीं, पर WHO को मत दो. Don't give me this international one. I said, okay, एक छोटा सा रिसर्च SNDT कॉलेज में हुआ है. He's saying, वो ठीक है. और मैं हमेशा सोचती रही कि उन्होंने क्यों ऐसे कहा. And I learned as a researcher to question WHO. And वो question करके मैंने मेरे लाइफ स्किल का प्रोग्राम, जीवन कौशल का प्रोग्राम बदल दिया है, which I'll talk about it later on. But so I started teaching in Gujarat, and you could say कि अब तक मैं सिखाती हूँ वहाँ rural in the villages. बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, छोटे प्रोग्राम्स किए हैं, बट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि जो भी प्रोग्राम्स किए हैं वो 100% सक्सेसफुल रहे हैं. Wow, awesome. Yes. Great. So no wonder इसीलिए आज 10 साल में या 9 साल में देश वहाँ पहुँच रहा है जहाँ हमने 10 साल पहले कल्पना भी नहीं करी थी. Because of his vision, actually. His vision, yes, right, definitely. And I think the way he is motivating people like you to do what you want to do is again a very risk also. But at the same time, ये शायद हमें लेना ही पड़ेगा. Yes. The kind of population we are and the kind of great nation we have always been. Yes. थोड़ा सा मैम, I'll just connect you. जो गुरुकुल से हमारे Guru has always been a very, very auspicious character in our lives. Yes. So how do you relate that thing with the program that you're doing of training teachers? Because again, ये इतना important चीज़ है that पूरी lives बच्चों की शेप हो सकती है. शायद मुझे ये लगता है कि हमारे टीचर्स बहक गए थे, और शायद ये कह सकती हूँ कि उन्होंने एक अलग रास्ता ले लिया था. वो उनका दोष नहीं है हमेशा. राइट. कभी कभी हेड पॉलिसी से आता है ये, कभी कभी हमारे सिस्टम में ऐसा होता है, और इसीलिए मैं गांव में काम करती हूँ. मैंने कभी भी in spite of, see, there are two things. In spite of getting incredible pay for an international school, I never took that up. I left a very good, full-fledged acting career to come into this. So it's not about money. It's about something that I really believe in. और मैंने सोचा था कि मैं सिस्टम बदलूंगी. Because you see, हमारे सिस्टम में वो रोट लर्निंग आ गया था, जो इंग्लिश में रोट लर्निंग कहते हैं, जो हम तोते के जैसे सब कुछ सीख लेते हैं. दूसरा ये आ गया था सिस्टम में कि टीचर इज नॉलेज सुप्रीम. वो कहेगी तुम सीख लो और जाके वो एग्जाम में लिख लो.
हमने क्या किया कि हमने हमारे बच्चों को सोचना छोड़, like we stop them from thinking. Right. पर हमारे गुरुकुल में हमारे गुरुज एंशिएंट टाइम से कभी ऐसे थे नहीं. ये कॉलोनाइजेशन से हुआ हमारे देश में. सैडली फॉर years and years हमारे कॉलोनाइजेशन हुआ है. फर्स्ट द इस्लामिक कॉलोनाइजेशन एंड देन द ब्रिटिश. Right. इनफैक्ट अब तक कोई भी ब्रिटिश इस्लामिक कॉलोनाइजेशन को मानने के लिए तैयार नहीं है. बट इट इज Correct. सो वी स्टॉप थिंकिंग. अब हम क्या कर रहे हैं कि हम टीचर्स को सिखा रहे हैं कि आप खुद सोचो और बच्चों को सोचना सिखाओ. Right. You see, thinking is a skill. Right. So, skill is something you need to practice. You need to apply it every day to become better and better. The two great thinking skills that are there in Jeevan Kaushal, which are there in life, in education, are creative thinking and critical thinking. Right. और मैं सोचती हूँ कि बालवाड़ी से, नर्सरी से, we have to teach children to think. Correct. Right. हम क्या करते हैं, हम उन्हें सोचने का चांस नहीं देते हैं. बोलते ये करो, वो करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो. फिर वो बड़े हो जाते हैं एंड देन से अरे तुम खुद कुछ नहीं कर सकते. बट नेचुरली आपने सिखाया नहीं. यू अंडरस्टैंड ना? Absolutely. So this has to be changed, and this is what I wanted to change. Wow. And I think he really encouraged this. So what I understand is कि यानी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, we will see a lot. Oh God, we'll start on the new education policy. So it's like 35 years तक नहीं लिखी गई, and we so desperately needing it. The way we have exactly, just see what happened. And like taking it aside, today if you open the newspaper, see how well we're doing in sports. right. I mean, till now we never got medals. What was wrong? Exactly. The same thing in education. I know that मैं college dropout थी. 40 साल की उम्र में मैं PhD करने गई एक फॉरेन यूनिवर्सिटी में. पर when I went into my viva, मेरे एग्जामिनर्स खड़े होके उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपको पास कर दिया है. your viva is not really necessary. of course करेंगे. आपकी जैसे PhD हमने पढ़ी नहीं है. Now I am an Indian. Right. You understand? Right. We Indians are like really good. We need to get this. Or the worst thing again, colonization. हमें सिखाया गया कि हम ठीक नहीं हैं. Exactly. हमारा एजुकेशन ठीक नहीं है. Veds and Purans are not for you. ये सब नॉनसेंस हमें सिखाया गया. तो the new education policy ये सब बदलने वाली है. Wow. मैं ये स्टैम्प पेपर पे लिख के कह सकती हूँ, this is one of the world's best education policies. Okay. Ma'am, but थोड़ा सा यहाँ पे I will definitely want to know more about the education policy, जितना भी आप share कर पाए with the audience at this point. Yeah. But there is a section of society जो बहुत ज़्यादा फैला रही है चीज़ that this new education policies, ये सब खत्म कर देगी, बर्बाद कर देगी. And on record, people like great actor Surya also said that we should agitate against this policy. सच में ऐसा कुछ है जिससे डरना चाहिए? There is nothing. This is such a super well thought of policy. Or something, on the committee, they had people from north, south, east, west. They had people from abroad, Indians from abroad. They had everybody, over there. So I don't understand how any one state or any one section can say कि हमारे लिए नहीं सोचा गया. अगर ऐसा है तो they have not understood the policy or there's a misunderstanding. Right. And there's something I've written here which I'll share with you. I didn't really, ऐसे कुछ प्लान नहीं था, पर जब आपने कहा ये, तो I will say this to you. I've talked in short, learning stotras can benefit children, our Bharatiya culture, promoting well-being, all that. But I've said the problem remains the issue of disregarding the suggestions in the national policy as Hindu nationalism persists. Bharat, that is India,
has passed through years of colonial subjugation, which has placed the nation in the midst of significant conflict. The aftermath of colonial rule has given rise to new educational aspirations in this altered social context. Therefore, the problem of instilling moral, spiritual values is no longer the same as it was centuries ago, and the solution cannot remain unchanged. So, what I mean is that we've had years and years of colonial rule. We जिस देश में इतनी दूसरे देश तो बर्बाद हो गए. They lost their culture and everything. Right. India, Bharat is the only country which has survived everything, still retaining it. Yes. Okay? पर इसके साथ क्या हुआ है? Different religions, different cultures have been introduced जो हमारे नहीं है, which is okay, which happens over centuries. But हम अभी तक वो colonial mindset में है जो ब्रिटिश के टाइम के था कि वो ही अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ये सिखाया कि तुम रबिश हो. India is rubbish. This is rubbish. But we are not like that. Exactly. We are very great. और मैं तो ये कहती हूँ, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, everyone, we all have one heritage. Yes. You know, we've started in the Sindhu Saraswati Sanskriti, which हम वहाँ से आए हैं. हमारा कल्चर सेम है. Exactly. So this is not, I mean, the NEP is not about religion. It is about that one culture जो, you know, हमें साथ में inclusive culture. So we need to understand that we, NEP or anybody is not talking about different religions. It's not talking about different languages. It's talking about one culture, which is India, which is Bharat. Right. Absolutely. So there are lots of things. Like, for example, I'll give you one answer of एक misunderstanding जो है. मैं ये तुम्हें अच्छी तरह से बता सकती हूँ क्योंकि हम उस ग्रुप में थे, नेशनल फोकस ग्रुप, जिन्होंने पोजीशन पेपर्स लिखे हैं, राइट? क्योंकि हमें समझना चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक पॉलिसी है, एक फिलॉसफी है, पर उसमें रोड मैप नहीं है, उसमें करिकुलम नहीं है. वो हमें बनाने थे, जो हमने सजेस्ट किए पोजीशन पेपर्स में. उसके बाद करिकुलम्स बने, अभी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स बन रहे हैं, राइट? सो ऐसा नहीं कि हमने वो कहा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी ये कह रही है कि द फर्स्ट लैंग्वेज should be the state language or the mother tongue, right? Agar mother tongue, supposing you go to Manipur, you're staying in Manipur or you're staying in Assam, or a Maharashtrian, for example, or a Gujarati, cannot learn that language in Assam. If you can't, right, then you learn Assamese. Okay? Because that's where you're living. और मदर टंग सबको मालूम है, जो माँ की भाषा है वही, दैट इज आवर बेस्ट लर्निंग. हाउ ब्रेन वर्क्स इन दैट लैंग्वेज, राइट? जब हम बच्चों को माँ की भाषा से अलग करके दूसरी भाषा सिखाते हैं, फॉरेन लैंग्वेज, दे डोंट लर्न सो वेल. They learn better in their mother tongue. Okay, so that's one thing. The second language was a choice of Hindi, English, etc. NEP में ये है कि 2 लैंग्वेजेस लिटरेचर के होंगे, थर्ड लैंग्वेज विल बी अ स्पोकन लैंग्वेज. संस्कृत का भी सजेशन किया है, अगर हिंदी नहीं करना है तो संस्कृत कर सकते हैं. फिर थर्ड लैंग्वेज कुड बी अ फॉरेन लैंग्वेज, इट कुड बी द स्टेट लैंग्वेज, इट कुड बी एनीथिंग एल्स. जैसे मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैं इंग्लिश वॉज माई फर्स्ट लैंग्वेज, विच वॉज सो सैड. But Hindi and Marathi was my second and third because मैं मुंबई में हूँ. Whereas मेरे husband Paresh, he went to a Gujarati school. So he learned Gujarati as the first language. He learned Hindi as the second language. And he learned English as the third language. So these are combinations, you know. मेरे बच्चे गुजराती स्कूल में गए थे, गुजराती ट्रस्ट है. So they did English as the first language, Gujarati as a second language,
because they're Gujaratis. And the third, they did Hindi. इतने सारे choices हैं, तो why is this झगड़ा about language? Right. So that is one thing. Right. The other thing is that I can't see anything else that's objectionable. ये language पे बिना जाने, most of the people are doing a झगड़ा, which is not correct. Correct. True. Also, you picked up this book, so you've got this book. Can we know more about this book? What is it about? I would love to talk about it. So this is play, practice, and pursue. Okay. There's a book of mine which is just released. Awesome. Okay. There is a beautiful thing in the National Education Policy जो कहता है 10 दिन बैगलेस होंगे. Wow. Okay. तो 10 दिन स्कूल में बच्चे बैग लेके नहीं जाएंगे, बुक्स लेके नहीं जाएंगे. फिर इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ेंगे नहीं. Okay. तो अच्छी अलग चीज पढ़ेंगे. Okay. वो प्री वोकेशनल एजुकेशन करेंगे. Okay. 9th स्टैंडर्ड से वोकेशनल इंट्रोड्यूस होता है. मैंने ये सजेस्ट किया था और मैंने इस पे काम भी बहुत किया था कि 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड में प्री वोकेशन करें. Okay. जो व्यवसायी होता है उसके पहले का, इन द सेंसेस कि अलग अलग व्यवसाय का इंट्रोडक्शन हो. Okay. Simple things like stitching, कुंभार काम, पेंटिंग, Okay. फार्मिंग. तो ऐसे अभी ये लिखा है बट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन था. तो मैंने खुद एक 10-day बैगलेस स्कूल किया एक गांव के स्कूल में. Okay. और ये बुक उसका एक्सपीरियंस की बात हुआ है. Okay. तो पहले चैप्टर में मैंने लिखा है कि NEP में क्या लिखा है एंड व्हाट इट शुड बी. एंड इफ आई कैन फाइंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज NEP में बहुत अच्छा लिखा है अबाउट द बैगलेस स्कूल में क्या होना चाहिए. इट इज़ लाइक फन. So much is there. I always have a big problem finding it. I'm sorry. Yeah. It's very nice. It's a fun course, Okay. which is super, Then grade 6 to 8, hands-on experience for vocations, crafts like carpentry, metalwork, pottery, gardening, etc. Local skills needs को ध्यान रख के सिखाना है बच्चों को. Practice based curriculum. Wow. That means जो भी करेंगे वो प्रैक्टिस करेंगे. इन द सेंस वो खुद करेंगे, नॉट सीखेंगे ऑन पेपर. Right. Yeah. Correct. Then heritage visits, Okay. Museums, historical sites, arts, quiz, sports, meet local artisans, Okay. and visit higher education institutions. Wow. It's beautiful. मैंने किया था. मेरे बच्चों को मैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी लेके गई. छोटे बच्चे 8th स्टैंडर्ड के, और वो यूनिवर्सिटी को देख के मैम हमें यहाँ आना है पढ़ने के लिए. You see, that's the inspiration. Right. Otherwise you drop out. कि आगे जाके क्या करना है. फिर हमने उनको वहाँ क्रिमिनल फोरेंसिक डिपार्टमेंट में लेके गए थे. Okay. और क्रिमिनल फोरेंसिक डिपार्टमेंट में द टीचर taught them things half a day. Okay. My God, what fun they had. I'm sorry. DNA के बारे में, fingerprints के बारे में. They did one very funny experiment. उन्होंने बोला मैं तुमको bribe दे रहा हूँ. So the student said, okay, this is the note, take it. So she took the note. And he said कि अभी तुम किसी और को दे दो संभालने के लिए. तो किसी और को दिया, फिर तीसरे को दिया. फिर उन्होंने कहा कि I am from the government और I'm going to catch you for taking a bribe. तो she said मैंने तो पैसे मेरे पास है ही नहीं, मैंने bribe नहीं लिया. तो they say okay, and they put a chemical on their hand and their hands became pink. Wow. Because that was on the note, that chemical. Right. And the children loved it because they never imagined कि ऐसा कुछ होता है. Then fingerprints के बारे में सीखा. So, this is what is there. Exactly. जैसे हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम किया था. जैसे वो वहाँ सब फार्मर चिल्ड्रन हैं. Okay. फिर भी उनके साथ हमने गाय आधारित सजीव खेती की. We did robotics to make toys. Wow. We made pots. We did stitching. And जब stitching किया हमने
तो विलेज की टेलर की वाइफ हमें सिखाने आई थी, और देयर वर बॉयज इवन इन आवर क्लास, और बॉयज एंजॉयड इट. उन्होंने वो कुछ बोज एंड फ्रेंडशिप बैंड्स वगैरह बनाए. तो ऐसे तुम ये पहनोगे? से नहीं, हमारी बहन को देंगे. सो यू नो इट इज ब्यूटीफुल. हम सोचते हैं को व्हाई बॉयज नीड टू लर्न. हमने वो डिसाइड किया था कि सब सीखेंगे. सो द गर्ल्स वर डूइंग रोबोटिक्स, और वो प्रोग्राम था हमारा तोड़ फोड़ जोड़. ओके. तो हम चीज़ लाए थे जो नहीं चल रही थी, और उनको जॉइन करके चलाए. फिर हमने सोलर पैनल बनाए. वाओ. सो यू नो दिस इज व्हाट वो 10 दिन में ये सब करना है, विच इज ऑसम. एब्सोल्युटली. और आई थिंक दैट इज द रीजन कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बोरिंग है, क्योंकि लाइफ जब आपको चीजें थ्रो करती है तो दिस इज व्हाट वी नीड टू नो. बिकॉज वो पेपर में पढ़ के तो कुछ इट विल टेक इयर्स अगेन टू एक्सपीरियंस एंड देन डू थिंग्स. सो आई थिंक कुछ बहुत ही अमेजिंग आने वाला है. आई विश काश ऐसा हुआ तो हमारे टाइम में आ गया. बताइए. कोई बात नहीं, योर चिल्ड्रन विल हैव इट whenever you have them. So But I definitely see a beautiful future of Bharat for the next. ब्यूटीफुल. दूसरी एक चीज आई जस्ट टेक इट. Please. अब वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड स्कूल में आर्ट इंटीग्रेटेड, स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड, मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होने वाला है. सो इमेजिन कि मैंने इन बच्चों के साथ ये किया था. हम मोढेरा सन टेम्पल गए थे, सूर्य मंदिर, और वहाँ वो सूर्य मंदिर इतना ब्यूटीफुल है. सूर्य मंदिर है ब्यूटीफुल, फिर वहाँ एक वाटर टैंक है. Okay. जो स्टेप्स है वो टिपिकल गुजरात एंड राजस्थान के स्टाइल. Modiji had shared its picture. Yes, that picture. Right. So वहाँ हमने बच्चों को फ्रैक्टल ज्योमेट्री सिखाई. You know वो repetition of style. And they said, मैम यहाँ ज्योमेट्री मैथ्स. I said चलो हम यहाँ मैथ्स करते हैं. You know, so this is experiential art integrated, जहाँ हम आर्किटेक्चर को देखने आए हैं, हेरिटेज विजिट कर रहे हैं, हम पॉटरी कर रहे हैं, और वहाँ हम मैथ सीख रहे हैं. मल्टी डिसिप्लिनरी आर्ट इंटीग्रेटेड. कल ही मेरी फ्रेंड का फोन आया था जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में सिखाती हैं. शी इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, शिवानी मिश्रा. शी सेड कि वीव गॉट द नोटिफिकेशन जो हमारे कॉलेजेस में भी हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराना है. So अभी colleges even are going to get out of just textbook learning. Experiential learning textbook को save करता है. It will help you learn better. Exactly. Right. बहुत सारे एक साथ questions आ रहे हैं मेरे. आप पूछो, don't worry. So okay, 2-3 things. One is that आपने इसमें you just read about shlokas of Sanatan Dharma. Yeah. So Stotras. So आपने आदित्य हृदय स्तोत्रम किया था. Yes, it is like super. तो हमारा theme था sun. Okay. Because it started with Modera Sun Temple. Okay. कि मुझे बच्चों को वहाँ लेके जाना है. Right. तो Sun Temple. So we'll teach them sun. So now I'll tell you one thing. Holistic learning. Right. You, me, children, everybody. पहले सोचते थे we are intelligence. So IQ. Right. धीरे धीरे said no, we are emotions. So EQ. और अब तक everybody is stuck on IQ, EQ. But our NEP is talking of PQ, that's physical quotient. Okay. It's talking of SQ, which is social quotient. Wow. It's talking of AQ, which is aesthetic quotient. Okay. This is one addition I have included is spiritual quotient. Okay. Wow. Because we are not just intelligence and emotion. Correct. We need to be physically strong. Like even in the Gita, Krishna Bhagwan says that you have to get up and do things. Otherwise it's inertia. Right. तो करने के लिए तो we have to be physically strong. Then social quotient, क्योंकि हम society में रहते हैं. Our parents, our family, our friends, people, anybody you work with, So we have to maintain communication, relationships with everybody. So social quotient. Aesthetic quotients, because
हम जो सनराइज देखते हैं, do we see the beauty in it? You know, Right. when we talk of poetry and literature without aesthetics, we talk of painting without aesthetics. What is happening to our cities? जो मशरूम की तरह ग्रो रहे हैं, no aesthetics. जो पहले था, you know, so aesthetics. But spiritual is the most important. Again, spiritual is not religion. Absolutely. Yeah? Yes. So spiritual is about your inner journey with the great power. Exactly. Whatever the power is. That power could be nature. It could be like I am a believer, so I believe in Sri Krishna. So for me, Sri Krishna. Right. Right? It could be Jesus Christ, it could be Allah. It could be just nature. Correct. It could be that flower. It could be that diya. It could be that flame. So spirituality. So I taught them Aditya Hridanam. Okay. Now Aditya Hridanam को मैंने बहुत sweetly सिखाया. It's a very difficult long slok. Shri Ram, on the final day of the war with Ravan, was very sad and he was like losing his hope. And Agastya Swami comes and tells him, say the Aditya Hridanam and you will get power. Now think of this. This is written in Valmiki's Ramayana. Right. अगर आप आदित्य हृदयम पढ़ेंगे तो उसमें beautiful चीजें हैं. Like the sun rises from the Himalaya and it sets, it goes towards the Vindhya and sets in the ocean. You know, it brings rain by, you know, evaporating water and then condensation and then the rain. And ये सब लिखा है. It's written that if you say, you know, listen to the sun and do the Aditya Hridanam, you will have health, wealth and power. Now see the health. Abhi we talk ke agar sun nahi hua, we don't get the sun Right. light, you go into depression. That's what it said. You see, we need that vitamin, the D, which comes from the sun. Health comes from sun. You know, countries where there's not enough sun, we are very lucky, you know, India. Absolutely. But there are countries where they don't have sun, there's so much depression. It's because of the, you know, this. So that's written in the Aditya Hridanam. But I wanted to teach them and I taught it to them as a story. Okay. That Ramayana made, you know, Ram Bhagwan said this. And guess what? जब वो war जीत के आ रहे थे, तो उन्होंने बहुत, he felt very bad that he had killed a Brahmin. So he wanted to do Paschata. And guess where he went? He went to the forest near Morera Okay. to do the Havan and Paschatap for that. Okay. So, you know, all these things were connected. फिर मैंने उनको सूर्य नमस्कार सिखाया for physical. Right. So, this is how we taught it. मैंने उनसे promise लिया था कि अगर आप आदित्य हृदयम once a week बोलेंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी. So, this was in June. I went just now in February. They say it every alternate day. They've learned the Hanuman Chalisa. And the 8th standard taught the 5th, 6th, 7th standard the Aditya Hridanam. How beautiful. Isn't it beautiful? क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत, I taught them this stotra like a game. Like I would go, राम भगवान का नाम है इसमें, कौन से नाम है बताओ, आज ढूंढ के लाना, हाँ कल. So one goes Raghav. So I said, yeah, but और क्या? They couldn't get it. In this, Ram is referred to as Mahabaho, Okay. the strong arm Right. person. So I said, that is Ram. So they say, oh, okay, you know. So, you know, I played games with them and I made it so light and they learned it so well. Absolutely. I think that's the trick, you know, and Fun, which is the first thing. Exactly. Yes. So with this conversation, the way we are heading और जो अभी तक आपने बताया, I think a lot of lobbies who say कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें बैकवर्ड ले जाएगी, आई थिंक उनको सारे जवाब मिल चुके हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक्चुअली कितनी It is superb. It's no question of us going backward. Right. One other very nice thing which I'll share with you is हम सब मैथ से बहुत डरते हैं, except the very okay. So हम सब मैथ से बहुत डरते हैं. Now imagine from the first standard or even from nursery, आप maths learning through sports, learning through arts. Imagine आप origami करते करते math सीख रहे हैं. See how beautiful it will be.
and it will be really wonderful. So I'm very hopeful for this. Great. So, ma'am, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं, but can we talk about the curriculum? What will we get? Yeah, the focus group. हमने जब लिखा था सब ग्रुप ने, हमने बहुत सारे आइडियाज लिखे थे. 99% they've accepted it. और अभी हमारा सिलेबस तो दूसरा, जब NEP आया, अभी 10 साल लग जाएंगे उसको अप्लाई करने में, बट ये मोदी जी है, this is Narendra Modi, Right. So in 2021 people were chosen to do the steering group. Okay. 2022 we wrote the position papers. Okay. 2022 end, the national focus group and the steering committee wrote the curriculum. Okay. We are now reached the stage where writing the syllabus. Wow. And the teacher learning material. So things are moving. Like we are told, we wanted yesterday. जो आपको काम दिया है वो कल हो जाना चाहिए था. But it's great because हम हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं. It's beautiful. So for example, बहुत exciting चीजें हैं उसमें. Till the 5th standard, everything is integrated. Okay. Maths, history, geography, language, सब कुछ. So one teacher will teach everything. Okay. And it will be through art and experiential learning. So it will be like drama, it will be toys. Yes, Modi sir loves this. Toys. Use toys to learn. Because we are children. I mean, not we, but the students. So the students have to learn. They're little, down first standard, वो अपने खिलौने छोड़ के आया है. But imagine वो स्कूल में आके खिलौने से ही सीख रहा है. So that's what it's going to be. Like I told you, language, 2 language for literature, 3rd will be a spoken language. One very interesting thing is that in the higher standards, 11th, 12th, there'll be a choice of learning the Indian knowledge system, which is the Shastras. Okay. There will be arts, there will be science, there will be humanities. I mean, humanities and science, and 3rd this. So it's your choice. Okay. Of course, you want to go in for science, we're going to do hardcore science, which is beautiful, but you will learn it like this. For example, experiential learning का, the audience may be thinking, क्या है? इसमें ही एक example है हमारे group. हमने soap making किया. Okay. Okay? Cold soap, not the hot soap because of safety for children. Right. But soap making के लिए measuring करना होता है, liquids, powders, then mixing it up, getting the chemical reaction. So my students जब soap बना रहे थे, उन्होंने physics, chemistry and math सीखा. Okay. You understand? That is experiential learning. और वो soap बना रहे थे. जैसे मेरे बच्चे जो sewing कर रहे थे, stitching. They learned maths because they had to do measuring, they had to do area, because, they have to cut the bow, they have to cut the ribbon, they have to cut the length. Now, ऐसे सीखने में तो कितना मजा है ना? I'm feeling so jealous. मुझे बाबा बच्चा, but I'm not jealous in that way that I will be teaching it. Correct. Absolutely. So, ma'am, जो मुझे समझ में आ रहा है, you are actually taking Bharat to the great nation we were through education. मतलब इससे ज़्यादा तो और कुछ हो ही नहीं सकता है फील, क्योंकि नींव ही आप पूरी वापस से वो कर रहे हैं जो हम एंशिएंट ग्रेट सोने की चिड़िया थे. What inspired you to do this? Very funny things happened. Okay. जब हमने शादी की और we had our children immediately, मैं थोड़ा काम कर रही थी, कम पर कर रही थी. मैंने एकदम छोड़ नहीं दिया था. पर एक दिन परेश जो बहुत काम कर रहे थे, he was doing lots of work. He had 3 shifts and all that. Okay. One day I told him, अनिरुद्ध को ज सिखाओ. तो वो ज सिखाने लगे. I said, 1 minute. आप काम पे जाओ, मैं घर पे रहूँगा. Because this is not happening, So that's how I started staying at home. But जब बच्चे स्कूल में थे तब मैं शूटिंग करने जाती थी, वापस आती थी. पर मैं उनके स्कूल में PTA में थी. अच्छा. तो I used to help in the PTA. पर मैं कॉलेज ड्रॉप आउट थी. ओके, मैंने BA भी पास नहीं किया था. एक दिन परेश ने मुझे बहुत स्टूपिड रोमांटिक नॉवल के साथ दिखे, इतने सारे थे.
He says, have you fallen to this? इतनी गिर गई हो तुम? तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने ओपन यूनिवर्सिटी में MA लिटरेचर का भर दिया. और मैं स्कूल में सिखा रही थी थ्रू ड्रामा, क्योंकि मुझे ड्रामा पता था. देन मैं स्पेशल एड सीखा. पर मैंने ये सब जब सीख रही थी तो मैंने देखा चिल्ड्रन नॉट एंजॉइंग स्कूल. उनके बैग्स इतने हैवी थे. एक दिन PTA का वो जो नहीं पेरेंट टीचर्स का वो जो मीटिंग होता है, उसमें मेरे आगे अनिरुद्ध के फ्रेंड और उसकी मम्मी चल रही थी. वो काफ़ी अच्छा था स्टडीज़ में, बट ही वॉज द फुटबॉल चैम्पियन. और उसकी मम्मी ने कहा, यू गॉट ओनली 85% इन मैथ्स, आई एम गोइंग टू स्टॉप योर फुटबॉल. और मेरा दिल टूट गया कि ये बच्चा 85 पर मिल रहा है, स्टॉपिंग समथिंग ही लव्स. तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे एजुकेशन सीखूंगी जो चिल्ड्रन विल एंजॉय, दैट विल हेल्प देम लर्न, and it'll be fun, it'll make them confident, and they will, challenge life or take up the life challenges well, without breaking down. क्योंकि mental health problem होता है बच्चों में. इसलिए मैं जो मेन काम करती हूँ, मैं वो जीवन कौशल सिखाती हूँ through drama. But because drama is an experiential learning and art-based learning, तो आई बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट. फिर मैं स्पेशल एड थी जो लर्निंग डिसेबल डिसलेक्सिक चिल्ड्रन के साथ काम कर रही थी, जैसे वो तारे ज़मीन पे दैट कैरेक्टर. सो आई टीच, सो मैं सब्जेक्ट टीचर भी हो सकती हूँ, मैं कभी कभी करती हूँ. बट मेन इज आर्ट इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड जीवन कौशल. बिकॉज ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, अच्छा तब सुइसाइड्स बहुत होते थे छोटे बच्चों में. मैंने एक तो इट वाज सो सैड कि वो लड़की फेल हो गई, तो वो स्कूल के विंडो में जाके कूद पड़ी एंड शी डाइड. आई मीन जस्ट थिंक ऑफ दैट विजुअल यार, दैट तुम मार्क्स में फेल हो गई हो, एक एग्जाम, एक छोटी सी टेस्ट, एंड यू गिव अप योर लाइफ. सो मैं ये चाहती थी कि मेरे देश के बच्चे ऐसे ना हो. तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टीचिंग. वाओ. और मैंने PhD में एक बहुत एम्बिशियस लाइन लिखी है. ओके. मैंने ये आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक आई एम नॉट एम्बिशियस एंड दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग, बट आई एम. और मैंने एक लाइन लिखी है कि मैं मेरे देश के सब बच्चों की जिंदगी बदलूंगी. Wow, that is very ambitious. Yes. Yes. See, I think ambition is not just making your own name or money. It is about some great thing you want to do. Very, yeah. And जो हमारी भगवद गीता कहती है कि जन कल्याण में किया गया हर कार्य यज्ञ होता है. So I see somebody here who is doing so much, and I really feel कि down the line when children would grow with this kind of education policy, क्या बनेंगे वो और हमारा भारत कहाँ पहुँचेगा. It is so amazing to know that. And it becomes difficult even because हमें every time we have to be so good. Right. पर वो मेरे प्रकृति में है कि जब भी एक भी लेसन सिखाऊं, दैट लेसन हैज टू बी फैंटास्टिक. ये मैंने परेश से सीखा है कि जब भी एनी एक्ट लाइक स्टेज पे जाऊं तो दैट प्ले हैज टू बी सुपर, दैट परफॉर्मेंस. यू कैन नॉट बी बैड जानबूझ के. राइट. यू कैन नॉट बी ठीक है ना, छोड़ना कल कर लूंगी. नो, इट हैज टू बी परफेक्ट. करेक्ट. So, that excellence, right? Or in fact, since you quoted the Gita में ये भी लिखा है, जो जनक राजा जनक को कृष्ण भगवान एग्जाम्पल दे के कहते हैं कि you have to be the big people or the gurus and the trendsetters. Right. Have to be so perfect because everybody will follow what they are doing. Correct. So if I said, जो कुछ भी मैं करती हूँ टीचर ट्रेनिंग में, मैं कभी ऐसा नहीं कहती हूँ जो मैं नहीं कर सकती. सो आई हैव टू डू इट and I can do it, then you have to do it. Okay. So that is amazing. So there was one podcast with somebody and Smriti Irani ji had said कि education policy लोगों को लगता है कि भाई यार क्यों नहीं कर रहे हैं, जल्दी करना चाहिए, इतने साल हो गए मोदी जी को and all. But बहुत लंबा process होता है, procedure होता है and challenges होते हैं. So were there challenges with the curriculum and the papers that you wrote?
ऐसे चैलेंजेस नहीं थे, टाइम के चैलेंज होते हैं, राइट, ओके, पर अगर कुछ बदलना है, दिस इज नॉट लाइक कि जाके स्ट्रीट लाइट लगा दो, राइट, राइट. दिस इज बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है. और भारत देश बहुत बड़ा है. यू नो, इफ इट वाज फॉर बॉम्बे, बट दिस इज इंडिया. करेक्ट, Another very beautiful thing is that people are thinking कि कुछ नहीं हो रहा है, पर ये गलत है. In the National Education Policy, there is 1 or 2 lines which said that the ministry should form a national mission for mentoring. okay, okay, So just to tell you that the National Council for Teacher Education, which is working with the Ministry of Education, have started the national mission for mentoring. So that was started 2 months back. okay, I'm so proud of that. Is that there are 79 lakh plus teachers in India. okay. उसमें से 60 को choose किया. अच्छा. I'm one of them. Wow, okay. And we started the mentoring mission. I am the group which is doing art integrated studies. Okay. तो NCTE के वेबसाइट में we have got a login. Okay. हम लॉगिन करते हैं और टाइम टेबल रखते हैं. ठीक है. Other people log on to our timetable and join our class. So, like last time I had a class in which I taught literature through art. Okay. And I had 50 teachers from Pune, Kerala, Assam, Madhya Pradesh, and Rajasthan. Okay. So, I mean, it's catching on. Right. But we've already started, so you can't say कि नहीं हो रहा है. Right. True. Correct. Ma'am, you also did a 75 workshop का program किया था आपने to mark the 75 years of independence. Yes. What was that about? तो मैं तो अपने PM की total fan हूँ. I think he personally like appreciated it. Yes. I was like, so उन्होंने मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि उन्होंने स्पोर्ट्स पीपल को बोला Okay. इन दैट ईयर दैट आप इतने मेडल्स जीते हैं, आप गांव-गांव जाके स्पोर्ट्स के बारे में बात करो. अच्छा. Okay. तो मैंने सोचा मैं किस बारे में बात करूं. तो मैंने सोचा मैं जीवन कौशल के बारे में बात कर. Right. Okay. तो मैंने एक छोटा सा फ्लायर बनाया और सोशल मीडिया पे रखा कि मैं 75 क्लासेस करूंगी फ्री. Okay. मुझे लिखो if you want to join in. Okay. The classes will be on Jeevan Kaushal. Okay. It can be for anybody, school, colleges, anything. Right. Right. So I did 75 classes, 18 states. Wow. Okay. And I did the 1.5 hour classes जो मैंने Jeevan Kaushal online सिखाया. Okay. And it was beautiful because I taught children in Jammu. Like गुजरात महाराष्ट्र में रिफ्यूज करती रही आफ्टर अ पॉइंट because I was getting a lot from there because people know me there. But I had from Assam, I had from Hooghly, Calcutta, West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan. Wow. Awesome. Yes. So, मैम जीवन कौशल का थोड़ा सा और हमें कुछ डिटेल्स मिल सकता है एग्जैक्टली क्या होता So that is life skills. है? Okay. Jeevan Kaushal are psychosocial skills with cognitive abilities. Okay. बड़ा है. Next me. Emotional learning, psychological जो होता है वो, social जो मैंने already बताया. So you know how communication. Right. हम घर में कैसे बात कर सकते हैं, बाहर कैसे बात कर सकते हैं, and all that. Cognitive skills are what जो मैंने पहले बोला, thinking skills, Right. creative thinking and critical thinking. Okay. Okay. तो this is that thing जो मैंने आपको बोला था WHO का. जी. तो WHO में है coping with emotion, coping with stress, communication, empathy, problem solving, decision making, creative thinking, critical thinking. Okay. मैं मोदी सर को मिली थी जब वो CM थे, तो उन्होंने मुझे बोला था, याद है WHO का मत बोलो. तो मैंने सोचा क्या है मैं भी देखूं. तो मैंने ज़्यादा स्टडी किया कोपिंग इमोशंस एंड कोपिंग स्ट्रेस. Okay. अभी कोपिंग नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. Right. अगर मैं आई एम इन स्ट्रेस
और मैं तुम्हारे साथ बात करके स्ट्रेस निकालूं, या गाना गा के, डांस करके, वॉक लेके, कुछ भी एक्सरसाइज करके आई टेक आउट स्ट्रेस, ये पॉजिटिव है। राइट, ओके। पर अगर मैं स्ट्रेस में हूँ और मैं सिगरेट स्मोक करूँ, अल्कोहल पी, दारू पीऊँ, ड्रग्स लूँ, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग, सो दैट इज कोपिंग विथ इमोशंस एंड स्ट्रेस इन द नेगेटिव वे। तो मैंने बोला कि मेरे प्रोग्राम में ये डबल वाला नहीं हो सकता, तो मैंने बनाया है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशन। राइट। फिर मैंने एक्सपर्ट्स को पूछा कि स्ट्रेस, वंस यू कोप विथ इमोशन, स्ट्रेस तो कोप हो जाएगा ना? तो उन्होंने बोला हमने स्ट्रेस इसलिए रखा है क्योंकि ये बज़वर्ड है, मीन्स इट्स इन फैशन। Oh my God. तो मैंने बोला फैशन मीन्स कल फैशन बदल जाएगी तो माई वर्क विल बी इरेलेवेंट, तो मैंने वो निकाल दिया। I've kept coping with emotion, understanding and coping with emotion. Then self-awareness. Right. Now self-awareness, मैं भारत देश के हूँ जहाँ हम आत्मचिंतन की बात करते हैं, तो I changed that and I made understanding self. So there's no limitation. Right. Right. Empathy, that is, I don't know, in Gujarati we call it samananubhuti. Okay. So I don't know exactly what the Hindi word for it is, I've forgotten. But it is to understand your emotion, feel your emotion, and communicate that understanding. Okay? So empathy, because that makes good society. Right. Correct. When people are empathetic, it brings people together, because मैं आपके problem समझूंगी in the real emotional way. Violence खत्म होता है या कम हो जाता है. Problems like rape, interpersonal violence, जो marriage life में violence होता है और friends में violence होता है, that will stop. Right. Because जब मेरा हाथ उठेगा ही नहीं, जब मैं आपकी feelings महसूस करूँ, तब मुझे लगेगा कि मेरे मुंह पे चाटा आया तो मुझे कैसे लगेगा. So you understand? Correct. प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, जो मैंने पहले बोला कि हम बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग करने नहीं देते, खुद के डिसीजंस करने नहीं देते. ओके आदिति बेटा, आज तुम ये ड्रेस पहन लो, अभी होमवर्क करो, फिर खेलने जाओ, और आज ये ही खाओ. आदिति कहेगी कि मुझे ये वाइट ड्रेस नहीं पहनना है, वो मुझे रेड ड्रेस पहनना है, मैं खेल के आके होमवर्क करूँगी. बट वी डोंट लेट यू डिसाइड. राइट. फिर 18 साल के होते हैं और हम कहते हैं तुम डिसाइड नहीं कर सकते. सो यू नीड टू लर्न दैट फ्रॉम द बिगिनिंग. एंड क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बिना लाइफ हो ही नहीं सकता. सो दिस इज जीवन कौशल. और जीवन कौशल सीखने से यू बिकम रेजिलियंट. व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर इट, आई डोंट रिमेंबर. बट जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम वो प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं. और मैं कैसे सिखाती हूँ पता है? सपोजिंग आई एम हियर और मुझे प्रॉब्लम आया तो मैं पीछे हो जाऊंगी, और सब सिखाते नो बिकम स्ट्रॉन्ग, कम बैक हियर. मैं ये सिखाती हूँ मैं यहाँ हूँ, प्रॉब्लम आया, मैं पीछे आ गई, आई एम सो स्ट्रॉन्ग, आई विल कम अहेड. ओके. तो वो जहाँ मैं पॉइंट पे थी उससे आगे आ जाऊंगी, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी जीवन कौशल से. सो जब एवरीबडी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, ऐसा है ही नहीं किसी के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स नहीं, पर हमें प्रॉब्लम्स फेस करना सीखना है. करेक्ट. अच्छी तरह से. राइट. एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे प्रोग्राम में, विच आई लव, विच इज़ लर्निंग टू से नो. एब्सोल्युटली. हम हमेशा सिर्फ हाँ कहना सीखे हैं, हम कभी नहीं सिखाते नो. बेटा लाइक एक चलना दोस्त, हैव द सिगरेट. अभी मैं डर के मारे सिगरेट ले रही हूँ, फिर मुझे लत लगती है. पर मैं अगर पहली बार कहूँ कि नो, आई डोंट वांट दैट सिगरेट, आई विल नॉट. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कम्स एंड ही पुट्स हिज हैंड ऑन माई लैप, से नो दिस इज नॉट ओके. पर मुझ में ये हिम्मत चाहिए, एंड दैट्स व्हाई ये मेरे क्लास में सिखाती हूँ पीपल टू गेट स्ट्रॉन्ग, to learn to say no. Correct. That no, this is not okay. So what I understand is, like my nephew is 15 now. So I always tell him कि हम लोग तुझे ये नहीं सिखाएंगे कि तुझे डिसीजन क्या लेना है,
we'll just tell you this is right, this is wrong, you decide. Yes. I think that is exactly जो आप Exactly. बता रहे हो कर. और मैं तो एक स्टेप आगे भी जाऊंगी, तुम खुद डिसाइड करो. This conversation is going somewhere कि मुझे ऐसा लग रहा है बस आप बोलते रहे, हमें नॉलेज मिलती रहे, एंड इट इज समथिंग जो किसी को भी नहीं पता है. मतलब फिर भी बाकी चीजें आपको सर्च इंजन से मिल जाएगी, बट दिस इज समथिंग नोबडी नोज एंड इट इज सो अमेजिंग टू नो व्हाट ऑल यू हैव बीन शेयरिंग राइट नाउ. और मैं ये सोचती हूँ कि ये जानना बहुत ज़रूरी है. ये सिर्फ टीचर्स या स्कूल लीडर्स के लिए नहीं है. जिनके बच्चे हैं, जिनके पोते पोती हैं, एवरीबडी शुड नो इट. राइट. बिकॉज ये इतनी चेंजेस आने वाले हैं, तो यू शुड नो ना कि क्या है. और मैं तो ये सोचती हूँ कि स्टूडेंट्स आफ्टर द 9-10 स्टैंडर्ड शुड बी रीडिंग इट देमसेल्व्स, क्योंकि कॉलेज को भी अप्लाई करता है ये. अनदर थिंग इज वेरी नाइस इन दिस, यू नो, which is lifelong learning. Okay. Is for people who are old and want to learn again. Okay. So सब कुछ है उसमें. It's very nice. Wow. So yeah, I will also ask you a little about your Miss India experience since you've been a Miss India. So tell us something about that experience now. So long back. Yes. 1979. Yes. I had already started modeling. Okay. और मैंने फेमिना का कवर किया था. तो फेमिना मिस इंडिया करती थी, विच इज़ द बेस्ट. इट वेंट मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स. फेमिना के साथ था टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का. तो मेरे फादर ने फॉर्म भरा. Okay. एंड ही सेड गो, एंड आई डिडंट वांट टू गो. Okay. और मैं सोचती थी किसको प्रूव करना है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ. तो डैड ने कहा कि अगर तुम जीती तो यूल गेट टू गो अब्रॉड. फॉरेन जाने मिलेगा. और हमारे ज़माने में इतना फॉरेन नहीं जाते थे, यू नो, और खुद के स्टीम पे, यू नो, अपने पैसे से, या यू नो, फॉर इट वाज रियली गुड. Absolutely. सो आई सेड ओके, चलो करती हूँ मैं. और मैं गई. जाते जाते परेश एंड आई न्यू ईच अदर देन, और मेरा भाई रजत साथ में था. मैंने बोला चलो ना, नहीं जाते हैं हम, कहीं खंडाला वंडाला चले जाते हैं, और 3-4 दिन के बाद जब सब शांत हो जाएंगे वापस आएंगे. तो परेश ने बोला देखो, आई डोंट वांट टू टेक अ पंगा विद बॉस. वी यूज्ड टू कॉल डैड बॉस बिकॉज डैड थिएटर में थे. Okay. जैसे आई विल लीव यू एट षणमुखानंद, फिर तुम अकेली वहाँ से भाग जाओ. तो अभी तो वो चांस ही नहीं रहा है टू पार्टिसिपेट. मैंने पार्टिसिपेट किया. मैं मिस बॉम्बे बनी और फिर मिस इंडिया. तब इट वाज ब्यूटीफुल. आई मीन आई फेल्ट रियली ग्रेट टू विन, यस. पर तब मुझे मालूम नहीं था कि ये कितना इम्पोर्टेंट होगा मेरी ज़िंदगी में. यू नो, वंस अ मिस इंडिया ऑलवेज अ मिस इंडिया. Absolutely. अभी मैं सिंस द लास्ट 10-12 years गांव में सिखाती हूँ. मेरे यू नो विलेज चिल्ड्रन, गर्ल्स आके सीखती हैं और घर जाके कहती है हमारी टीचर तो मिस इंडिया है. Wow. यू नो, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम इतना बढ़ता है कि यू नो वी डोंट हैव एन ऑर्डिनरी टीचर. हमारी टीचर तो यू नो मिस इंडिया है. Right. सो दे फील वेरी हैप्पी दैट यू नो मैं सिखाती हूँ उनको. Absolutely. दूसरा एक जादू है जो मेरे नाम के साथ जुड़ा है, स्वरूप संपत के साथ. फिल्म्स की जो नहीं करनी थी, एक्टिंग किया जो नहीं करना था. वो परेश और शफी भाई के साथ बैठती थी थिएटर में, तो उन्होंने मुझे रोल कराया. मैं एक्टिंग, आई वॉज वेरी शाई. तो एक्ट्रेस बन गई मैं. ये जो ज़िंदगी किया, बिकेम अ बिग नेम, बिकम इंडियाज स्वीट हार्ट. Absolutely. Yes. लाइक आई कितने लोगों को मिली हूँ मैं. अभी मैंने किसी को मिली, इसे स्वरूप जी माफ़ करना, आपसे एक बात करनी है. सो फिर हाँ, इसे मैं कॉलेज में था जब आप मिस इंडिया बनी. 2 अलग सेक्शन थे. एक ग्रुप, एक लिस्ट थी लड़कियों जिसके साथ यू हैड एन अफेयर विद, और एक लड़की थी एक ग्रुप थी जिनके साथ यू नो यू वांटेड टू मैरी एंड यू कुड डिपेंड ऑन, एंड you were in that list. Wow. So I said thank you. That's a huge compliment for a girl. Absolutely. And then you know North India में ये चलता था कि mothers used to say
बहू लाओ ना तो उसकी जैसी बहू लाओ. Right. So it is really funny, you know. You became that idea. I became that idea in a different way, you know, in a nice way. Right. एक बार जब ये जो जिंदगी चल रहा था तो I met a couple. तो the husband says स्वरूप है ये, मिस इंडिया है, रेनू है ये जो जिंदगी की. तो that girl said, हाँ, you know something, मेरे husband मुझे रोज हैरेस करते हैं. So I said, what happened? He said, अगर फाइटिंग करनी है, घर में झगड़ा करना है तो इनसे सीख के आओ, इस तरह से झगड़ा करो. Oh my God, like you know, like वो कितना स्वीट झगड़ा करती है. So you know, you became a name. Correct. Right. अभी ये नेम बहुत यूज करती हूँ मैं. Okay. जब मुझे किसी बड़े आदमी से मिलना है, किसी के ऑफिस में जाना है, तो ऐसे स्वरूप संपत आपसे मिलना चाहती है. फिर मैं अंदर जाके मेरा एजेंडा चलाती हूँ. Like talk about education, talk about this, talk about the play. अगर you know, like you say, okay, we will interview an ex-Miss India. Said yes, we will interview, and then I will talk about. So it's very beautiful. Now, no, मुझे लगता है कि भगवान ने ये किया मेरे लिए. And ma'am, जो ब्यूटी पेजेंट्स में बोलती हैं, जो the contestants, will do this, will do that, and all this. I think you are truly doing that. Yeah. मतलब this is how a Miss India should be. I मैं think. बहुत लकी थी जब मिस इंडिया बनी. तब editor was a fantastic editor called Vimla Patil. Okay. Mrs. Vimla Patil was one of the best editors ever. She had that idea, you know, woman of substance. तो सिर्फ beautiful नहीं, Right. you know, with intelligence, with spirituality, with aesthetics, with strength, Absolutely. you know, the empowered, सशक्तिकरण, Right. you know. Right. So I think हम मिस इंडियाज उस टाइम के तो स्पेशली ऐसे लाइट नहीं थे, you know. Right. I think there was that strength of character. That dignity. That thing. Yeah. So I think आने वाली generations पे बोलेंगे, you know, our curriculum has been written by the Miss India. beauty Miss India. This is so amazing. You know, it is so. And I think it's like really funny, Dan, God, you know, like they kind of said, no, but no. You know, अगर मैं ordinary teacher नहीं हूँ. You know, it always begins, I'm a Miss India, I'm a superstar, and I'm a teacher. Right. So it's beautiful, you know. I'm not. If you read my Twitter bio, it goes actor, teacher, mother. Right. So I'm proud I'm an actor. Absolutely. Because people look down sometimes. No, I'm not. I'm very proud. You know why? I'm really thankful to Shafi and Paresh for making me an actor. Because the best teacher in the world has to be a great storyteller. And I think all actors are the world's best storytellers. Wow. Because it's our profession. That's a beautiful perspective. Isn't it? So I don't feel shy. Like when the pandemic came and we had to do online, I did it very well. The camera was my friend. Yes. Absolutely. You know, so I could do it. I am one of the best storytellers because I'm an actor. Correct. I think जो drama के through आप सिखाती है, That is because of my theatre. Yeah, exactly. Wow, how amazing. Isn't it amazing? Yeah. And that Miss India. Another thing which I was thinking, what did I want to tell you? So, क्लास में जब मैं सिखाने जाती हूँ, मैं बहुत सिंपली ड्रेस करती हूँ, naturally. Right. So I wear a simple सलवार कमीज या चूड़ीदार कुर्ता. जो हमने सिखाया था जब we were doing special eds, sleeves, proper neck, you know, like. And then the girls go, आप तो कितनी सिंपल हैं, आप तो हमारे जैसे हैं. So I said, हाँ, obviously हम सब same हैं. Right. So this is inclusion. Exactly. You know, so we are not, I am not there and you are there. Exactly. My student is in line with me. True. I think that also inspires them that, you know,
they can read. read. Exactly. Yes. Exactly. अगर at the beginning हम सब सेम है तो हम भी बड़े बन सकते हैं. Exactly. I think that's what माननीय प्रधानमंत्री जी also has become an ideal for, क्योंकि सबको यही लगता है यार अगर वो कर सकते हैं मतलब हम भी कर सकते हैं. मेहनत तो करनी पड़ेगी. Nothing is going to come without that. Exactly. Exactly. पर एक ड्रीम जो बेसिक चीज होती है वो देखने के लिए you need an inspiration. So I think But he is born to it. So you work towards. Right. It was so lovely having you here, and My this pleasure. was an amazing conversation that we had. So much of in-depth knowledge और इतना beautiful सा था सब कुछ. I'm really grateful to you कि आप आए यहाँ पे, and all the best for everything. I'm looking at a very bright future of Bharat in terms of education. So thank you so much for all that you have done. Actually, thank you for inviting me. And thank you for so much for all that you have done for the education policy and what you're doing for the nation. You know why I'm especially saying thank you, Aditi? क्योंकि लोग समझते नहीं हैं. A teacher का interview, you know, star का interview, Right. big people का interview, but a simple teacher, But teacher ही तो नींव रख रही है उस स्टार की भी, और they don't understand is that teacher who's going to teach you to do the Chandrayaan. Exactly. Absolutely. Wow. Thank you so much, ma'am. Really pleasure having you. एक बार आ जाता है curriculum तो maybe we'll ask you please थोड़ा time निकाल के वापस. Oh yes, बताए क्या होने वाला है. definitely. Great. Thank you. Thank you, Aditi. That was Swaroop Sampat ma'am for all of us, and पूरे studio की energy बहुत ज़्यादा charge हो गई है. I hope everybody who had a problem with the national education policy without even knowing about it, who had a problem कि कहीं भारत backwards ना चला जाए, उन सब के questions इसमें answer हो गए हैं. Convince नहीं हुए हैं आप तो wait for some time, you'll get more details, more insights about it once things are in place. Thank you so much for watching this podcast. अगर आपको ये podcast पसंद आया हो तो please like, share and subscribe. बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट जब आए तो आपको पता चल जाए. थैंक यू. नमस्ते.